Good evening, all. Heartiest welcome to the function today. I request all to rise for the national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Suphalaam Malayaj Sheetalaam Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Bharat Mata Ki. I welcome the August gathering here for the unveiling of the book, Lieutenant Colonel Purohit, The Man Betrayed. We were to have 3 dignitaries from the police department, all retired IPS officers of the DGP level. Unfortunately, Mr. Sanjay Barve, who was the Commissioner of Police Mumbai, is taken ill and he is not able to attend today's function, but he has sent his wishes for the function. Another IPS officer, Dr. Satyapal Singh, who is an MP from Bagpat for 2 terms. He started to come to Pune by road from Mumbai, and in the middle, since he is an MP and a former union minister, he got some message from Delhi headquarters of BJP that he has to go back to Delhi for an urgent meeting. So he also unfortunately cannot attend today's function. So we are here with our third and the senior most of them, the IPS officer, Mr. Jayant Umranikar, who was also a DGP when he retired. I request Mr. Dhananjay Barve, Mr. Prasad Purandare and Mr. Paritosh Pradhan to escort Jayant Umranikar sir, Major Gaurav Arya, the anchor for the function today, Renu Kaul Verma ji, the publisher, and of course the author, Smita Mishra ji. Sir, please come to the dais and we'll perform Bharat Mata Puja there and then we'll come on the dais. I take this opportunity to welcome the dignitaries for today's function. First and foremost, our guest of honor, at whose hands we are going to unveil the book, Sri Jayant Umranikar sir. Umranikar sir has been the Commissioner of Police at Nagpur and Pune. Also has worked for 22 long years in R&AW and had a very distinguished and a very clean career in the police department. He's an intelligence expert and has been doing a lot of research work as well as writing after he has retired. I request Dr. Barve sir to felicitate and welcome Mr. Umranikar. We also have the publisher Srimati Renu Kaul Verma here today from Vitasta Publications. I request Sri Prasad Ji Purandare to come up to the dais and welcome Renu Ji.
And of course, the author of the book, senior journalist from Delhi, who is an advisor to Prasar Bharati, and she's done a wonderful job, and we respect what she has done, and most importantly, we respect her right of speech and the freedom of speech, and that's why we are gathered here. The reason to say so was we had so many pressures coming from various directions for not having this function. But if they can have their right of speech, why can't we have the freedom of speech on our side? So I request Paritosh Ji Pradhan to come to the dais and welcome Smita Ji. And lastly, but most importantly, the anchor or the master for this whole event, a very well-known face on the national television, a firebrand anchor, a defense expert, a former major with the Indian Army, and of course everybody knows him. No need to introduce Major Gaurav Arya. I request Barve sir to welcome him. I request Barve sir, Prasad ji, Paritosh to come to the dais. We'll be having the launch of the book. Thank you, sir. Now I call upon the author, Srimati Smita Mishra, to come up to the dais to share her thoughts of the book. आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पर इस सभागार में पधारे हैं। सबसे पहले तो आप सब पुणे के निवासियों और आसपास के जो लोग हैं और जो बाहर से भी इस कार्यक्रम को अटेंड करने पहुंचे, आप सबको सादर नमस्कार। हम शब्दों में नहीं बता सकते कि आप सबका आना यहाँ हमारे लिए कितना हर्ष का विषय है, लेकिन हर्ष से भी ज़्यादा ये हमारे लिए हिम्मत देने वाली बात है। आप लोगों ने हमें साहस दिया है। मैं जहाँ जहाँ जीवन में रही हूँ और अब मैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मेरा कार्य है, तो मेरा निवास भी वहीं है। हालांकि काम के सिलसिले में हम सभी राज्यों में जाते हैं। मैं जानती हूँ कि इस तरह से एक सभागार में इतने लोगों को एकत्रित कर पाना एक गंभीर विषय पे कितना बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले जो हमारे सभी साथी, हमारे सीनियर्स आज यहाँ हैं, उनको भी मैं सबसे पहले अपना आभार जताना चाहूँगी कि उन्होंने ये पहल की, ये इनिशिएटिव लिया कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए। वरना किताब पब्लिक डोमेन में आ गई थी, लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन एक साथ लोगों को जमा करना, उनको ला करके और एक जगह एकत्रित करना, उस पर विचार विमर्श करना, बातचीत करना, इसके लिए मैं आयोजकों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबकी उससे ज्यादा कि आप लोगों ने यहाँ इतनी संख्या में आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है। आप सोच रहे होंगे कि किताब लिखी जाती है तो उसके लॉन्चिंग का कार्यक्रम तो पहले से तय होता है, और आजकल तो लॉन्चिंग बड़े प्रोफेशनल तरीके से होती है। उसमें बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको उसमें काम दिया जाता है और बड़े ही एक बड़ा बिग टिकट आयोजन होता है वो। तो फिर इस स्थिति में हम लोग क्यों आज इस आयोजन को लेकर इतना
शुक्रगुजार हैं आप सबके और इस पर इतनी बात कर रहे हैं, उसके पीछे साथियों एक पृष्ठभूमि है. There is a background to why I have started speaking to you from the point of view of having an event like this, that too in the auditorium of an educational campus. Some of the reasons are simple, you must have guessed already, some you may not have. सबसे पहली बात यह है कि जब से साथियों ये किताब आई है, बाजार में, मार्केट में आई है और लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम लोग, इंटेलिजेंस के, पुलिस के और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग, जो राजनीति में या देश के करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, ऐसे लोग, पत्रकार लोग, और सबसे ज्यादा कॉमन सिटीजन्स, यंगस्टर्स, जो कि किसी भी राजनीति या सुरक्षा व्यवस्था से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, लेकिन कंसर्न सिटीजन होने के नाते उनकी इसमें रुचि भी है और वो जानना चाहते हैं. उनके अंदर सच्चाई को जानने की एक ललक है और इसीलिए बिना कोई प्रमोशन किए, बिना कोई प्रयास किए ये किताब धड़ाधड़ लोगों के घर पहुंच रही है, ऑनलाइन, ऑफलाइन. बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि ऐसे एक विषय पर क्यों मुझे लिखने का एक विचार आया, क्योंकि क्षमा कीजिएगा, जब से ये पुस्तक आई है सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर हो रहे हैं कि इस पे लिखने की क्या जरूरत थी. मतलब एक पत्रकार है आप, एक न्यूज रिपोर्टर है, तो इतने विषय देश में रेलेवेंट हैं, तो उसको छोड़कर ये करने की क्या जरूरत थी. बहुत कम शब्दों में साथियों मैं इसका एक बैकग्राउंडर आपको दे दूं. बात यह है कि जिस समय हिंदू टेरर का विषय, हिंदू टेरर का, सो कॉल्ड सैफरन टेरर का विषय अखबारों में रोज सुर्खियां बन रहा था, हर रोज हेडलाइन होती थी, फ्रंट पेजेस अखबारों के, टेलीविजन के सारे प्राइम टाइम डिस्कशंस, डिजिटल मीडिया तब थोड़ा थोड़ा ही पिकअप हो रहा था, आज के जितना नहीं था लेकिन था. इन सब पर हर रोज हर क्षण एक नया एक्सपोजे आता था, सो कॉल्ड एक्सपोजे. जो कहां से आता था ये भी इस किताब में आपको पता चलेगा कि ये एक्सपोजेस कहां से रोज आ रहे थे और जिन लोगों को उसमें संलिप्त बताया गया, उसमें भारतीय सेना के एक सर्विंग, डेकोरेटेड, डायनामिक आर्मी ऑफिसर का भी नाम आया. और चूंकि यह कई दृष्टिकोण से बड़ा सूट करता था, पॉलिटिकली भी और नैरेटिव के लिहाज से भी, कि देखो जी भारतीय सेना में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, तो एक तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित मीडिया की नजर में, पूरे ग्लोबल मीडिया की नजर में, भारत में एक तथाकथित हिंदू टेरर अचानक से अवतरित हो गया है, इसके वो एक चेहरा बन गए. ही बिकेम द फेस ऑफ सो कॉल्ड हिंदू टेरर ऑल ओवर इन द मीडिया, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. मैं जो डिटेल्स हैं कि क्यों मेरा ये स्पष्ट मानना है, और पिछले कई वर्षों में इस बात को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं. मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि भाई इसमें जो बातें हैं वो तो कहीं ना कहीं टुकड़ों में पब्लिक डोमेन में आती रही हैं. जो लोग इस विषय में, इस संदर्भ से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि इसमें नया, बिल्कुल नया कुछ नहीं है. लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने, यहाँ जैसे कुछ साथी हमारे बैठे हैं, हमने कुछ यंगस्टर्स के साथ इस विषय पर बात किया. तो हालांकि अभी ये कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है, कुछ समय की बात है, लेकिन पब्लिक मेमोरी इज सो शॉर्ट कि मैंने देखा कि ऑलरेडी लोग जो हैं, उस समय क्या हुआ था, ये कैसा एक मकड़जाल तैयार किया गया था, ये जो कंस्पिरेसी थी, इट वाज सो वेल स्क्रिप्टेड, इट वाज मेड टू लुक सो कन्विंसिंग. तो मैंने देखा कि लोग ऑलरेडी भूलते जा रहे हैं, नाम भूलते जा रहे हैं, विषय को भूलते जा रहे हैं, उस समय क्या हुआ, और बहुत से हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो उसके बारे में अभी जानते भी नहीं हैं, उनको इस विषय की जानकारी नहीं है. तब मुझे लगा कि जब आप हिंदू टेरर के विषय को, आजकल तो सर्च का जमाना है, कुछ जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी में या किसी सीनियर से मिलने नहीं जाना पड़ता, सर्च करके जानकारी एक्सेसिबल होती है. आज अगर आप हिंदू टेरर पे हम सर्च करते हैं तो हमें एक पक्ष की मिलियंस ऑफ पोस्ट्स और मिलियंस ऑफ न्यूज आइटम्स और सारा तथ्य मिल जाता है. लेकिन दूसरा पक्ष जो हमारे लिए जानना सबसे जरूरी है, ताकि दोबारा देश के साथ ऐसा ना हो, दोबारा एक समाज को
एक चीज के नाम से लेबल करने का ये जो प्रयास है ये ना हो, इसके लिए दूसरे पक्ष का कोई कुछ मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि 6-7 साल में अगर ये स्थिति है तो 20 साल के बाद साथियों जब कोई सर्च करेगा तब उसको पता चलेगा कि भारत में तो जिहादी टेरर इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना कि एक हिंदू टेरर था, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे वो देश भर में बम ब्लास्ट करवाते थे और एक फॉल्स इक्विवेलेंस तैयार करने का प्रयास, ताकि जो वास्तविक टेररिस्ट है उसका अपराध कम दिखाई दे, उसके पैरेलल एक कहानी खड़ी करने का प्रयास। तो मुझे लगा कि 5-6 साल में अगर लोग इसको भूलने लगे हैं सभी बातों को, तो समय है कि हम भी रिकॉर्ड पे कुछ दर्ज करके जाएं, क्योंकि आज से 20 साल के बाद हमारी पीढ़ियों को ऐसा ना लगे कि इस देश में कुछ लोग थे हु आर फियर्सली पेट्रियोटिक, वो देश के लिए समर्पित है, लेकिन उनको एक दूसरे रंग में दिखाया गया। और मैं दावा तो नहीं करूंगी, बट आई कैन से इट विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर अभी हमने सच्चाई को रिकॉर्ड पे नहीं रखा तो साथियों जब हम और आप चले जाएंगे या हमारी अवस्था बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यंगस्टर्स को कुछ नहीं पता चलेगा कि उस दौर में क्या हुआ था देश में। इस सच्चाई को रिकॉर्ड पर लाने के लिए मैंने ये प्रयास किया। मुझे बहुत समय लगा, कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, कहने को तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में था, लेकिन उसको एक साथ पिरोना, एक थ्रेड में, एक पर्सपेक्टिव में डालना। कोई इसको इस रूप से देखता था कि इट वाज अ सीक्रेट ऑपरेशन गॉन रॉन्ग, कोई इस रूप में देखता था कि कुछ सिरफिरे लोग हैं, कोई इस रूप में देखता था कि एक संगठन है आरएसएस जो ऐसे लोगों को तैयार करता है, कोई इस रूप में देखता था कि भारत में तो हिंदू समाज है ही एक्सट्रीमिस्ट, इसका व्यवहार ही ऐसा है, और वो पुराने पुराने आख्यान उसमें जोड़ देते थे जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के मुझे लगा कि ये टुकड़ों में जो जानकारी है इट नीड्स टू बी थ्रेडेड टुगेदर, इसको एक सूत्र में लाना है। और उस समय की राजनीति क्या चाहती थी, क्यों किया गया, क्या मकसद था, इस पर्सपेक्टिव को उजागर करने के लिए इसको एक किताब की शक्ल देनी है। अलग अलग आर्टिकल से काम नहीं बनेगा। ये मेरा पूरा दृष्टिकोण था इस पुस्तक के पीछे। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं आप सब उसको पढ़ें। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी क्या क्या व्यक्ति को झेलना पड़ा, कैसे कैसे अमानवीय टॉर्चर हुए, परिवार को क्या क्या देखना पड़ा, और सबसे बढ़कर ये स्टिग्मा जो झेलना पड़ा, और एक पूरा समाज इसमें लेबल किया जा रहा था। तो ये तमाम मेरी चिंताएं थी। एक न्यूज रिपोर्टर को होने के नाते समय समय पर बहुत कुछ मैं जानती थी। मुझे लगा कि इससे पहले परमात्मा मुझे बुला ले, मैं इस काम को करके जाऊंगी। लेकिन किताब जब से आई है साथियों, बहुत एक तो जैसा मैंने कहा कि सबके सवाल होते हैं कि इस विषय पे क्यों लिखा, वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर ये हुआ कि कैसे लिखा। तो मैं आज यहाँ, ये पुस्तक के पहले पन्ने में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ आज रिकॉर्ड पर, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, देश के सुधी लोग हैं, आप सबके सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3-4-5 लोगों के नाम मैंने एक्नॉलेजमेंट में दिए हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद की, मुझे सहायता की इस पुस्तक को पूरा करने में। लेकिन there are dozens of names who were very encouraging, very supporting in their inputs, in their help. Unfortunately, there are people in such positions whom I cannot name. Neither could I have named them in the book, nor can I name them here or in any public platform, because they are serving or retired. They are in a position where they cannot come out on record. आज इस मंच से, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित द मैन बिट्रेड मेरी पुस्तक का पहला इवेंट है, पब्लिक इवेंट, आज इस मंच से मैं एक बार फिर जो मैंने किताब में लिखा है उन सारे अननेम्ड लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मैं आपका नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप सब ने जो मेरी सहायता की है इस पुस्तक को पूरा करने में, वो नाम मेरे साथ ही चले जाएंगे मेरी चिता में, लेकिन वो जो ग्रैटिट्यूड है वो कभी नहीं जाएगा। और आप सबको भी ये सोचकर पढ़ना होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके उसमें नाम नहीं है, लेकिन उनके बिना ये पुस्तक संभव नहीं हो सकती थी। रेणु जी के लिए एक विशेष
आभार मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि कई स्टेज ऐसा है जब मुझे लगा कि या तो ये पूरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द रेलिवेंट मटेरियल, इवन दो इट वॉज इन पब्लिक डोमेन, देयर वर टू मेनी इश्यूज। फिर बीच में कोविड का काल आ गया, तो ट्रैवल करना, लोगों से मिलने जाने में भी रुकावटें आ गई। रेनू जी ने लगातार मुझे पुश किया, लगातार मुझे दबाव डाला, प्रॉड किया। जब भी मैं ढीली पड़ गई लिखने में तो मुझसे कहा कि कितना दिन और लगेगा, पूरा करो पूरा करो। और मैं आज यहाँ इस रिकॉर्ड पे कहना चाहती हूँ कि देश में बहुत बड़े बड़े बिग टिकट पब्लिकेशंस है, करोड़ों का खर्चा करते हैं किताबों पे, लेकिन जब कोई किताब ऐसी आएगी जिसको छापने में पब्लिशर को ठिठक जाना पड़ेगा, तब रेनू कौल वर्मा उसको छापने के लिए सबसे आगे आ जाती है। और ये वितस्ता पब्लिकेशन के किताबों की लिस्ट अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे या उनकी लिस्टिंग में, तो आपको मेरी बात का भरोसा हो जाएगा। एक दो सवाल आए हैं कि ये मैटर सब जुडिस है। जो कह रहा है मैटर सब जुडिस है, उसने मेरी किताब पढ़ी नहीं है, शायद पलट के भी नहीं देखी है, क्योंकि एक शब्द भी जो ऑनगोइंग ट्रायल है उस पर इस किताब में नहीं है। It is written in a political perspective with events that are already in the public domain and inputs. दूसरा कहा गया कि क्यों लिखा, किसने लिखवाया, किसी ने नहीं लिखवाया। मुझे एक दिन अचानक एहसास हुआ कि ये रिकॉर्ड पे नहीं गया तो ये सच्चाई धीरे धीरे देश भूल रहा है, आगे की पीढ़ियों को तो पता भी नहीं चलेगा। इसको रिकॉर्ड पे दर्ज करने की आवश्यकता है। तीसरा पूछा गया मुझे क्या मिला, पब्लिकली आरोप लगाए गए कि पता नहीं इनको क्या मिला। मैं आज बताना चाहती हूं, मेरे सोशल मीडिया के मैसेजेस पे, मेरे घर के नंबर पे, पता नहीं कहां से मेरा मोबाइल नंबर ढूंढ ढूंढ के, कॉमन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू संदेश भेज के, मुझसे आकर मिल करके, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, वो मेरे मित्र नहीं है, मेरे परिचित नहीं है, मैं उनको कभी जानती नहीं थी, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स आर कॉलिंग एंड मैसेजिंग मी एंड सेइंग थैंक यू स्मिता जी फॉर राइटिंग दिस। हर रोज दर्जनों ऐसे मैसेज मुझे आ रहे हैं कि थैंक यू स्मिता जी फॉर डूइंग समथिंग इट नीडेड टू बी टोल्ड। और एक ही वाक्य वो कहते हैं, थैंक यू, इट इज अ स्टोरी दैट नीडेड टू बी टोल्ड। ये मुझे मिला है, और ये इन हफ्तों में अगर मुझे मिला है तो मुझे लगता है कि ये उपलब्धि मेरे लिए बहुत है। पुस्तक बिकेगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचेगी, रेनू जी को मुझसे भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन जो मुझे मिलना था वो मुझे ऑलरेडी इन मैसेजेस और लोगों के संदेशों में मिल चुका है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, पुस्तक को पढ़िए, उस पर विचार करिए, और इस दृष्टि से भी एक बार सोचिए कि जिन लोगों ने मिलकर ये पूरा कंस्पिरेसी तैयार किया तथाकथित हिंदू टेरर का, वो एक हद तक तो चल गया, लेकिन उस रूप में टेक ऑफ नहीं कर पाया राष्ट्रीय सोच में। इट डिड नॉट टेक ऑफ एट द स्केल इट वॉज इंटेंडेड टू। लोगों को उस पर शक हो गया। अगर ये थ्योरी चल जाती बड़े लेवल पे, तो ये विचार जरूर करिएगा कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होता। जिस दिन हाफिज सईद ने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है हाफिज सईद कौन है, जिस दिन हाफिज सईद ने भारत पर सरकास्टिकली कमेंट किया कि भारत में हिंदू समाज एक्सट्रीमिस्ट है, वो टेरर फैला रहा है और हम झेल रहे हैं, कितना बड़ा वेपन, कितना बड़ा हैंडल दिया हमने देश के दुश्मनों को हमारे ऊपर आक्षेप करने के लिए। तो अगर हिंदू टेरर का ये पूरा मकड़जाल सक्सेसफुल होता तो किसको फायदा होता, इस पर जरूर विचार करिएगा। मैं एक बार फिर आप सबकी बहुत आभारी हूं कि आप सब इतनी संख्या में आ रहे हैं और आप हमारी बात सुन रहे हैं। बैठिए, हम सब उमरानिकर साहब को सुनने को भी आतुर हैं। गौरव जी आए हुए हैं, हमारे विशेष सीनियर भी हैं, वी ऑल एडमायर हिम। तो मुझे अनुमति दीजिए और मैं चाहूंगी गौरव जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद स्मिता जी। इसके आगे हमारी पब्लिशर जो है रेणु जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार रखें। थैंक यू। मैं स्मिता जी जितना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैंने कुछ लिखा है और उसी को मैं पढ़ के आपके सामने सुनाऊंगी। उन्होंने बहुत सी किताबों का जिक्र किया कि हम लोगों ने वो किताबें की है, और आपको उनकी बात पे यकीन होगा कि
हमारा जो publishing house है, we dare the system. So I do request you to please visit our website and see what kind of work we are doing. Namaskar, distinguished guests, ladies and gentlemen. एक तो जो उन्होंने बोला मैं भी बोलूँगी, it is such a delight to see a packed house. Despite all the hullabaloo that happened in the last couple of days, it is so nice to see all of you here. Thank you. We live in the world of knowledge, and no one should have monopoly over the truth. So I am glad the event is happening. I feel honored and privileged to be a part of this function. Thank you. Ever since its inception, इन्होंने वितस्ता का बात किया तो उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ. Vitasta Publishing has dared to take up issues that the society feels agitated about. This desire to dare the system led us to publish an iconic work titled Brahmacharya Gandhi and His Women Associates. Many publishers had refused to publish this, but when we flipped through the pages, we realized that every word in it was attested by Gandhiji himself. I do not understand when the Mahatma was not shy of writing about his Brahmacharya experiments. Why should we be defensive? The book became an instant hit and opened new horizon of thinking about Gandhiji and a better understanding of the events that even his colleagues had failed to appreciate. Our book, Denied by Allah, written by a Muslim woman, was perhaps the first to talk about the issues of halala and triple talaq in proper perspective. Yet another book, India's Biggest Cover-Up, documented how successive governments tried to hide the secret of Netaji's death. The book and later its adaptation into a film educated public opinion. Similarly, the book on late Prime Minister Lal Bahadur Shastri, Your Prime Minister is Dead, brought to the fore an alternate narrative, which I feel is very important for a healthy discourse. You all must be wondering why I am taking names of these books. This is to arrive at a point that all our books, including Colonel Purohit's, are well researched and well documented and are based on indisputable facts. We do not allow hearsay and abuse to get vent in the book. We are not concerned whether you belong to one shade of the ideology or the other. If an author has something to say that would further learning and scholarship, we welcome it. The book on Colonel Purohit also falls under the same genre. There is a heart-rending story based on documented evidences. Everything is already in public domain. It just needed someone to bring together these facts in a logical manner. I'm happy Smita ji did it. Her spirit of inquiry as a journalist led her to figure out various questions impacting Colonel Purohit's incarceration. The court is yet to pronounce its judgment. It's been 14 long years. We cannot not comment on matters merely because the court is seized of the matter. Now everything is debated openly in the media, and rightly so. The world wants to know what happened and why, and we cannot be waiting indefinitely. We are not holding any brief or trying to influence the judicial process. We just felt there was a story that needed to be told. We as publishers get excited when we hear such a story. The prosecuting agency has a view, the army establishments had their own view, and Colonel Purohit his own. What was the basis on which he was arrested and prosecuted? Out of my own personal curiosity, I spoke to many in the army. Not even one doubted Colonel Purohit's integrity, that he is patriot of the highest order is what each one of them said.
It is sad a person of such an impeccable reputation had to suffer like this. We can only hope and pray there is a speedy closure to the case and Colonel Purohit gets justice long overdue to him. Thank you. Namaskar. Thank you, ma'am. Now we'll be having a kind of a panel discussion which will be anchored by Major Gaurav Arya. We'll be starting with his own thoughts and then moving on to putting forth questions to the panel here. I hand over the reins to Major Gaurav Arya. Thank you, sir. Jayant, ladies and gentlemen. It's indeed a happy sight to see so many of you here. And, you know, when I discussed with a few friends in NCR, Delhi, many of them said that, you know, I don't think you should go because it will be very controversial. It will be all over social media and it will be controversial. I said, this is the exact reason why I'm going. I hope it becomes controversial. And they said, no, because, you know, you work for a media house, you consult for a media house, and you should be seen to be neutral. This is what they told me, and I told them very honestly, and I have absolutely no hesitation in saying this in front of everybody, and I know there are around 6 odd cameras recording this. I was never neutral. I never said I'll be neutral. I'm not a journalist. I'm a nationalist. I have no interest in being neutral. Prasad Sirikant Purohit is my junior from the academy, and we met in the academy in 1993, and we lost touch after that. I was not in touch with him. It is one day somebody called me and said that, you know, Purohit has been arrested. And I was very surprised. I said, which Purohit are you talking about? He says, you remember that guy, Maharashtra wala tha jo ek, Prasad Purohit, SS 58. He has been arrested. I was very surprised. I said, he was the nicest guy in the world. Why would anybody arrest Purohit? Purohit can't harm anybody. He's always a thorough gentleman, always very patriotic, very upright. But then this is what happened. And then I realized later, you see, it's not about 2008. That is 2008 and all that. See, something else happened. This whole thing that, you know, Smita ji spoke about Hindu terror and all that. It is not just Colonel Purohit's case. You know, Ajmal Kasab was made to wear that kaleva on his hand. So, there is a story behind this. And the story is this, that if you keep on telling a lie one after the other and you keep on saying stuff, you keep on repeating a lie. Joseph Goebbels is a very famous case in point. Hitler's minister for propaganda, and he said that if you keep on repeating a lie 100 times, people will believe it to be the truth. And this is what they wanted to do in Colonel Purohit's case, no? Keep on repeating this lie of Hindu terror. And it makes for a very delicious story, by the way. It makes a fantastic story. One army officer of the rank of a colonel in military intelligence, he has a secret life and he is actually a Hindu terrorist. And this guy took the RDX and the explosives and he rigged it onto a motorcycle, and, you know, it's like a Bollywood movie, right? And you want to believe something because all of us, most of us lead very boring lives. But then you throw in a story like this, you say, wow, yaar, ye kaise ho gaya? And you can't remain disconnected with this kind of story. This story was fabricated. This story was fabricated to fix an officer who was extremely upright. Today, you know, Colonel Purohit is not here. And one thing I've learned from Colonel Purohit's life, and may God give him 100 years more to live. But one thing I've learned from his journey so far is that, you know, in the toughest circumstances,
in the toughest circumstances, it is only your morality and your sense of right and justice that can keep you going. This is what I learned from Purohit. And one thing which I want to tell Colonel Purohit, because he's not here, and I hope that his friends will convey, इस दुनिया में इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए. ठीक है, बदमाशों के साथ तो फिर आपको बदमाशी करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी. And but I have a lot of respect for him, a lot of regard for him, the way he has conducted himself. When he came out of jail, you saw those images. 9 years in jail, and when he came out, he was dressed like an army officer. Huh? ये मैं आपको बताता हूँ आर्मी ऑफिसर की ड्रेस कैसे होती है. मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं. ये शर्ट के 3 बटन, ये बेल्ट और ये पैंट की जिप लाइन बिल्कुल एक लाइन में. वो 9 साल जेल के बाद भी ऐसी जेल के बाहर निकला था. It's difficult to break such a guy. Right? Having said that, we will start discussions, and after that, with the permission of the organizers, we take some questions from the audience, which you can, directly address to the publisher, the author, and our main guest here. And so let me start with first talking to the author of the book. My first question goes to the author of the book, and I would like to ask you, Smita ji. Some of it you have covered in your speech that you gave. आपका motivation, ये किताब क्यों लिखी आपने? This is not something that will become very popular. इसके pressures भी हैं, mental peace चला जाता है. I know जब आप बोल रहे थे ना, I could connect to it. The first thing that goes away is your mental peace, because there are so many pressures. ये आपने लिखा क्यों? ये किताब क्यों लिखी? क्यों आपने फैसला करा कि no, I have to write this book? क्योंकि कभी-कभी होता है, I'm sorry, कभी-कभी होता है, कुछ राइटर्स के साथ होता है कि अगर ये नहीं लिखा ना तो फिर सांस आना बंद हो जाए. एक होता है कि लिखना ही है ये जानना चाहता हूं आपसे. हाँ, तो मतलब कम शब्दों में कहे तो ऐसा ही हुआ कि एक स्थिति धीरे धीरे वो एक दिन में नहीं हुआ सर. वो एक दिन में नहीं हुआ, वो मंथन होते होते एक दिन ऐसी स्थिति आई कि मुझे लगा कि अब मैंने नहीं लिखा तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं किया. इसलिए मैंने अपनी पुस्तक के प्रीफेस में लिखा भी है कि मैंने अंत में जिस दिन पुस्तक कंप्लीट हुई, मुझे हम लोग ना अपने फिलोसोफर से, जो हमारे ज्ञानी जन हैं, हमारे सेजेस हैं, ऋषि हैं, उन सब से हम ये फिलोसफी बहुत ज्यादा सुनते थे कि ऑलवेज थिंक दैट द जर्नी इज द डेस्टिनेशन. जो यात्रा होती है दरअसल वही आपका डेस्टिनेशन है. लेकिन ये बड़ी एक किताबी एकेडमिक सी बात होती है कि जर्नी इज द डेस्टिनेशन. इसका जो कितना गूढ़ार्थ है, कितना डेप्थ है इस बात में, इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन फाइनली मेरा मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ. मुझे लगा जैसे कुछ खाली हो गया. मतलब वो पुस्तक 4 साल लगी मुझे तैयार करने में, उसके एडिटिंग का प्रोसेस, तमाम लोगों से मिलना, उससे संबंधित सारा रिसर्च करना. तो जिस दिन खत्म हुआ मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे उस दिन सुबह उठ के मुझे याद आया कि आज पुस्तक से रिलेटेड कुछ नहीं करना है. तो आई फेल्ट वेरी एम्प्टी. ये पुस्तक एक तरह से मेरे लिए एक जीवन का हिस्सा बन गई थी कुछ सालों के लिए, कि रोज उठ करके उसमें कुछ जोड़ना है, कुछ करेक्ट करना है, कुछ बदलना है, कुछ ठीक करना है, किसी और से बात करनी है. ये भी आज जोड़ना चाहूंगी गौरव जी, आपने संदर्भ लाया तो, कि मैंने उन सब लोगों का आभार व्यक्त किया है जिन लोगों ने मदद की मुझे इस पुस्तक के जानकारी को कंप्लीट करने में. मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहती कि हाउ मच स्टोन वॉलिंग आई फेस्ड. कितने लोग थे जो इनफॉर्मल बातचीत में इस विषय पर बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते थे कि उनको सब पता है. लेकिन जब मैंने कहा कि मैं इसको लिखना चाहती हूँ, रिकॉर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट में लाना चाहती हूँ, तो या तो फोन उठाना बंद कर दिया, या मिलने का समय देकर गायब हो गए, या साफ कह दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरी तो पेंशन रुक जाएगी. तो ये सब मुझे आई हैड टू कंसिडर देयर कंसर्न्स आल्सो. लेकिन आपने पूछा कि आखिर आपने लिखा क्यों. मैंने इसलिए लिखा गौरव जी क्योंकि इट जस्ट डिडंट एड अप. देश एक विशेष कुछ ताकतों के समर्थन से देश भर में आतंकवाद फैल रहा था, और उसके बीच में जब पूरा देश इससे उद्वेलित था, अचानक एक दिन सुबह उठ के 11 बजे हेडलाइंस फ्लैश हुई कि इस देश में एक हिंदू टेरर जैसी चीज है, और बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, आर्मी में सर्व करने वाले हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और भी कुछ प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, वो सब मिलकर के खिचड़ी पका रहे हैं और देश भर में ब्लास्ट करने वाले हैं. और जिन जिन ब्लास्ट में
कन्फेशन मिल चुकी थी। डेविड हेडली ने समझौता के बारे में कन्फेस कर चुका था। सफदर नागौरी का कन्फेशन था। आरिफ कासमानी को पकड़ लिया गया था। समझौता की बात कर रही हूं। इसी तरह से दूसरे भी 3-4 जिन बॉम्ब ब्लास्ट्स में पूरी कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, उसको रोक करके सडनली उसको हिंदू टेरर दिखा दिया गया। इट वॉज बैफलिंग। कोई भी व्यक्ति, मैं मानती हूं रिपोर्टर को न्यूट्रल होना चाहिए, उसको जो जानकारी मिले बैलेंस करके लिखना चाहिए, लेकिन रिपोर्टर कोई स्टेनो है क्या? रिपोर्टर कोई गुड्डा है क्या? कोई रोबो है क्या कि रिपोर्टर को आप जो फीड करेंगे वैसा का वैसा छाप देगा? मगर अफसोस के साथ कह रही हूं कि 3-4 साल यही हुआ। जो फीड करते गए लोग, वो छापते गए लोग, उसमें और मिर्च मसाला जोड़ते गए। एक रिपोर्टर ने ये नहीं सोचा कि ये जो एकदम से देश में एक हिंदू टेरर खड़ा हो गया है और उसके आते ही जो है वो जिहादी टेरर जो है वो एकदम से उसको पीछे ढकेल दिया गया। जिसमें लोग पकड़े गए थे वो अचानक पलट के दूसरी एकदम एक्सट्रीम हो गया और फिर एक दिन अचानक से हिंदू टेरर का कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। डज इट मेक सेंस? डज इट एड अप? क्या रिपोर्टर्स को भी लॉजिकल नहीं होना चाहिए डिक्टेशन लेने से पहले? चाहे वो राजनीतिक ताकतों का डिक्टेशन हो, चाहे वो किसी एजेंसी का डिक्टेशन हो, चाहे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का डिक्टेशन हो। देश की राजनीतिक व्यवस्था, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ उसमें ऑफिसर्स दबाव में थे या उनका भी कुछ रजामंदी थी और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने मिल करके एक थ्योरी खड़ा की और उसमें गौरव ने बताया कि इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी, इट लुक्स टू बी अ ब्रिलियंट स्टोरी, लाइक अ फिल्मी मूवी। इसमें सस्पेंस है, इसमें ड्रामा है, इसमें एक्शन है, इसमें परिवार है, इसमें ट्रेजेडी है। कौन सा एलिमेंट नहीं है ड्रामा का इसमें? अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी रियल। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड बाय अ फिल्म राइटर। It involves people in real life. People in real life have been affected. एक फिल्मी स्टोरी और इस स्टोरी में अंतर यही है, एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन यहां जिंदा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। It's so real. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मिता जी। मैं रेणु जी आपके पास जाता हूं, आप पब्लिशर हैं और उसके बाद मैं उमरानिकर सर के पास आऊंगा, लेकिन I'll go to you first. उसका रीजन है मैं एक सर्टन फ्लो में काम कर रहा हूँ। प्रेशर तो हमने देखे हैं, जो प्रेशर होते हैं किसी के ऊपर भी कि आप ये मत करना। मुझे तो एक ने बोला, मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो कर्नल पुरोहित भी उसको जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो दिल्ली में बोला कि फोटो मत खिंचवाना पुरोहित के साथ, कि सोशल मीडिया में चले गए लोग बोलेंगे कि पुरोहित को जानता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर शेर को फोटो खिंचवानी दूसरे शेर को ही बुलाएगा, बकरी को थोड़ा ना बुलाएगा। तो ये जो लोग हैं ये प्रेशर डालते हैं। मैं रेणु जी से मेरा ये सवाल है, एक किताब छपी थी 26/11 आरएसएस की साजिश, याद है आपको? और बड़े बड़े महानुभाव, ऐसी कोई स्टेज था मुंबई में जहां पे उसका विमोचन हुआ था। संवैधानिक पद पे बैठे लोग थे और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बोला कि 26/11 जो थी वो आरएसएस की साजिश थी। अच्छा, ये इतना मैं बता रहा हूं, दो इट इज अ ट्रेजेडी, और एक दूसरे तरफ से देखिए इतनी बड़ी कॉमेडी, इन लोगों ने लश्कर तौयबा का दिल तोड़ दिया। वो लोग कह रहे हमने करा, नहीं नहीं तुमने नहीं करा, हिंदू ने करा है। वो कह रहा है भाई साहब हम, हाँ ये वो कह रहे हैं उन्होंने अपने 10 बंदे भेजे मुंबई में, बेगुनाह लोगों का कत्ल करा है, एंड दे वर वेरी प्राउड कि हमने बेगुनाह लोगों को मार दिया। वो कह रहे नहीं तुमने नहीं करा, तुम गलत बता रहे हो, इन्होंने करा, हिंदुओं ने। ये इनकी आदत है, बम फोड़ देते हैं ये बीच में। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, ये जो आपका पब्लिशिंग हाउस है और ये जो आपने किताब पब्लिश करने का सोचा, राइट, उनको तो सपोर्ट मिल गया 26/11 आरएसएस की साजिश, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ऐसा है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 1947 की जो राइट्स हुई थी वो भी मोदी जी ने कर, दे आर परफेक्टली केपेबल ऑफ सेइंग। उनको फर्क नहीं पड़ता मोदी जी पैदा हुए नहीं हुए, वो रिपीट करते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर किस प्रकार के प्रेशर्स आए? जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया में फोटो मत खिंचाना उनके साथ, और वो सबसे बड़ा प्रेशर है, क्योंकि हमारा जो पब्लिशिंग फ्रेटर्निटी है, इट्स
पब्लिशिंग भी और मीडिया भी कुछ हद तक बहुत लेफ्ट लीनिंग होता है. सो हमारे जितने भी पत्रकार दोस्त हैं, जितने भी पब्लिशिंग के प्रोफेशनल्स हैं, दोस्त हैं, उनका थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है उसमें. अब हमको कुछ बहुत से हम ऑथर्स ढूंढते रहते हैं हर जगह पे. अब आपके जो वेल एस्टैब्लिश्ड सो कॉल्ड ऑथर्स हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं, बिकॉज यू गेट ब्रांडेड. क्योंकि इससे पहले हमने एक किताब की थी हिंदू टेरर, हाँ, द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, मनी साहब की. तो इस तरह की किताब, बिकॉज आई बिलीव इन देम, आई डू ट्राई एंड यू नो डू एज मच एज पॉसिबल. लेकिन फिर दूसरी साइड का जो क्राउड है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है. This is not only about business then. Yeah. This publishing house is not only just about business. Yes, exactly. It has to be a mission. It is a mission, but you do need commercials also to carry on. Yes. So which does not happen. It does not जैसे happen. आपके किताब, जबकि ये बहुत अच्छा कर रही है किताब, we've already sold the first edition, but it is all online. Offline, people are still reluctant to keep the book, the booksellers, bookstores. तो इस तरह का राइट विंग किताब, जो थोड़ा सा राइट विंग, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी उन लोगों को लगता है, और वो लोग किताब को रखने को थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं until they know that yeah it is a best selling किताब और किताब पैसा देगी, और वो रखने लग जाते हैं. तो it has started now. I was in Mumbai last 2 days and people did order, the distributors did order in bulk, but अभी तक, जबकि 1 महीना हो गया था, ज़्यादा ही हुआ है, अभी तक उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया था. तो ये सब प्रेशर्स हम लोगों पे होते हैं, थोड़ा सा ब्रांडिंग हो जाता है वैसा. So you cannot, because our books are comparable to any of the big publishing houses and we have to compete with them, but to compete with them that is initially, yes, initially. जबकि आपका publishing house, it's not about right wing or left wing. आप सिर्फ you want to publish the truth. Exactly, and I do have authors, since I also have journalism background, so I have all those left friends also. Yeah. And I have authors who are communists, and as I said, that Denied by Allah, that is written by a communist lady. But वही है कि बहुत कम इस तरह के लोग हैं जो हमको जानते हैं कि it is not the ideology that matters to me. It is the truth. The truth and the book. देखिए, अगर इस किताब का 60-70% लोग जानना चाहते हैं, तो why should I not do it? Why should I stay away from something which people want to read? So it is, as he said, it is a mission for us, but it is also a business. So if you see that business sense also, then also, why should I not do something which people want to read? No, बिल्कुल ठीक है. Right. I'll go to Mr. Jayant Umranikar, sir. Sir, you served for 2 decades in RNAW, sir, and then you retired as DGP. So, my question to you is this, sir. You've seen intelligence operations all your life. Is this level, I think mic is on, sir. नहीं? आप थोड़ा सा, हाँ, it's on, sir. You know, is this level of deception common, sir? Where you pick out somebody, a serving army officer, you pick him out who has done nothing, and then you create an entire story to fix him. उसको फंसाने के लिए आप एक पूरी story बनाते हो. Do classical intelligence operations look like this? Yes. I think I'll have to reveal quite a few secrets if I start answering this question. Yeah. Well, in my professional life, I have dealt with even more senior officers of not an Indian army, of some other army. And we could compromise them. And we could extract intelligence which was of vital importance to Indian interest. But we never created this kind of bakwas. See, ultimately, your narrative has to be correct. Intelligence is a very difficult profession. Basically because there is a certain immorality built into it. I am trying to subvert somebody's loyalty because it is in interest of my country. So you have to go through a lot of churning in your mind whether I will be able to do this.
You have to preserve your own morality, but you have to subvert somebody else's morality. Unfortunately, in this case, what has happened is, it is not the external intelligence agency that has compromised a serving army officer, a distinguished army officer. Whatever has appeared in the press, it seems that there were other agencies, I won't take the names, there were other individuals who were interested in creating this kind of narrative. But I would like to concentrate on something else. What hurts the most in this case is, it exposes our criminal justice system. A person gets arrested, he is in jail for 8 years, till date the case has not been decided. He has been investigated by at least 3 investigating agencies. और जितनी भी investigating agencies थी, वो सभी मौका परस्त निकली. मतलब हर एक ने मौका लगाया उसमें. Why are they using मौका? Because मौका gives you a chance to record a confession. Confession recorded by a police officer under मौका provisions is acceptable in the court of law. And then you had 3 sets of confessions recorded by 3 agencies. Many of them seem to be contradictory from whatever has appeared in the press. So you are reminded of the Orwellian scenario, 1984. All animals are equal, but some animals are more equal than the others. Here you have confessions. All confessions are true, but some confessions are more true than the others, depending on who is taking them. So this is a very, very big stigma on our system. And I earnestly feel that when you have a very potent law which is needed to deal with the terrorism, if you do not use it properly, tomorrow or day after somebody is likely to say that this law is being misused to a great extent, scrap it. And that will create a huge problem for the police system as well as our judicial system. What has happened in this case brings this out rather vividly. Although I will not comment because the case is still sub judice at the trial stage. That is where evidence gets examined. So I will not comment more than this on this issue. Jay, thank you, sir. I'll go back to the author. And Smita ji, my question to you is, this whole thing about which became very controversial for a while, and a lot of people were talking about it, about Dawood Ibrahim Kaskar coming to India. ये क्या स्टोरी है? दाऊद इंडिया आया, किसकी शय पे आया? क्योंकि अभी तक तो यही था कि दाऊद कराची में रहता है. दाऊद इंडिया कैसे आया? किसने मदद करी उसकी? आपके हिसाब से आपने किताब में क्या लिखा है कि वो क्यों आया? नहीं, पर्टिकुलरली दाऊद के उसका जो उनसे संबंधित जो उससे खबरें आती हैं समय समय पर, एक बार थोड़ी आई है. दाऊद से संबंधित खबरें वो है जब कोई खबर ना हो तो दाऊद चला दो. हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे, हार्डकोर रिपोर्टिंग, तो ऑफिस से डांट पड़ती थी कि कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है. वैसे सर दाऊद पे कुछ चला है, करो बात करो, किसी से बात करो, कुछ तो कर ही रहा होगा. दाऊद के घर में शादी हुई होगी, परिवार में कोई नया मेहमान आया होगा, कोई दावत हुई होगी जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े गणमान्य लोग, डिग्निटरीज पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के आए होंगे बिरयानी खाने, या फिर दाऊद को लेकर कोई नया ये आया होगा. तो दाऊद इज दैट एवर ग्रीन स्टोरी. मगर एक चीज गौरव जी यहां लाना चाहूंगी कि राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों पर ये सवाल होते हैं कि दाऊद और दाऊद का पूरा जो वो एक पूरा साम्राज्य पनपा मुंबई में, और वहां से उमरानिकर साहब के सामने बोलने की धृष्टता कर रही हूं, इनके सामने मैं क्या इस पर बोलूं, लेकिन मैं एक रिपोर्टर की दृष्टि से केवल इसको रखना चाहूंगी. सर को सब पता है, जो राजनीतिक ताकतें गौरव जी
जिनके प्रश्रय पे दाऊद इब्राहिम एक्चुअली दाऊद इब्राहिम बना और उसका साम्राज्य पनपा, वही ताकतें हैं जो ये चाहती थी कि देश में हिंदू टेरर का एक थ्योरी चले। इन्होंने ना बोल के सब कुछ बोल दिया, आप समझ गए सब, ठीक है ना, सब समझ गए। अच्छा रेणु जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये किताब पब्लिश हुई, ये किताब मार्केट में आई, फर्स्ट एडिशन इज सोल्ड आउट, इट्स अ बेस्ट सेलर, और अभी जागरूकता और बढ़ रही है और मेरे हिसाब से बढ़ेगी। और आपको कभी थ्रेट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन क्या प्रेशर आया आपको कभी? किसी ने ये पूछा कि क्यों छाप दी ये किताब? कोई लोग अनकंफर्टेबल हो गए क्या इस किताब से? बोला था कि कितना पैसा मिला आपको कर्नल साहब से इसको किताब को छापने के लिए, सो दैट वाज द मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जी। पर ऐसे कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी इस तरह की किताबें की है जिसमें हमको बोला गया मत करो। अच्छा, थ्रेट देने वाले भी थक गए होंगे, बोल के एक किताब दो किताब। ऐसा कुछ कोई करता नहीं है। मुझे लगता है इस तरह की किताबें ऑल्टरनेट नैरेटिव आना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी दैट लोग इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोसते हैं आजकल की कोई बात नहीं कर सकता है, कुछ नहीं होता है, बात करेगा तो चला जाएगा, पर कुछ नहीं है। मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड वी हैव so many alternate histories, you know, that are being published and people are reading them and it's a good time. नहीं, मैं एक वीडियो है, जॉनथन निकलस है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, तो आप YouTube पर जाके उसको देखिएगा। जॉनथन निकलस ने बोला कि जिस तरीके से चाइनीज करते हैं, मैं आप ही के बाद दोबारा I'll ask you this question। तो जॉनथन निकलस से पूछा कि भाई ऐसा होता क्यों है, how do the Chinese manage it? तो he says what is the most sensitive thing in America with respect to all the communities, but here he is talking specifically about Chinese spying in America, चाइना की जासूसी जो चल रही है। तो what is the most touchy topic in America? It is race. Race is the most touchy topic in America. So if you capture a Chinese spy, अगर आप किसी Chinese spy को अमेरिका में पकड़ लेते हैं, these bunch of Chinese origin people who are doing very well in United States, they have something called a committee of the 100. It is called the committee of the 100. You can look it up on social media. And these people start saying that, you know, the FBI is racial. They are doing racial profiling. Just because that person is Chinese, usko arrest kar liya. So then nobody wants to touch it. Similar is the case in India. Anybody telling the truth, you tell him you are communal. He'll back off. Because nobody, कोई पढ़ा लिखा आदमी ये नहीं चाहता कि दूसरा आदमी उसको बोले you are communal. So you take a step back and you say अच्छा ठीक है. This is something that the left wing ecosystem thrives on. आप कभी भी देख रहे हैं इनका modus operandi, they thrive on this. They thrive on the fact that they can tell you on your face that you are communal. और मुझसे पूछते हैं कि बड़ा famous case है, I'm coming back to you, I'll just like to quote. They said Nathuram Godse killed Mahatma Gandhi. I said yes he did. The issue is that Nathuram Godse killed Mahatma Gandhi. Nobody has denied it. Even Nathuram Godse has not denied that I killed Mahatma Gandhi. You know, he's not saying Hafiz Saeed or somebody killed. He's saying I killed only. He has agreed, and he was hanged for it. Now the word here being used is terrorist. Classically, the word used is assassin, because the Indian courts have said he has assassinated the Mahatma. But आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि terrorism has become such a bad word, you say that Nathuram Godse is a terrorist. If you don't say he's a terrorist, you are communal. And here I am, a Fauji officer, trying to explain the technical difference between a terrorist and an assassin. There is a technical difference. It is not the same thing. If it was the same thing, it would have been a synonym. A terrorist is not a synonym for an assassin. But see, this is how they twist. So this thing is that you have seen this war of narratives going on because you publish such books. कभी आपने नेम एंड शेम वाली चीज फील करी है? फील तो बहुत की है, बट आई एज वी ऑल्सो टोल्ड यू व्हेन वी वर सिटिंग देयर, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो इफ आई स्ट्रांगली बिलीव इन समथिंग, आई डू इट.
So this has happened. The only thing is that I have lost many friends in the process, and I have lost many authors who would have otherwise got published by me. As you said, you are a nationalist, I am a nationalist too. So I look at the content. If I strongly believe in the content, whether it is by a right winger or a left winger, I do publish it. पर वही जो आपने बोला कि I have lost many friends in the process of publishing all these books. There is an emotional price you pay. Yeah. Sir, social price also, you're right. Sir, your views on, this, हम मानते हैं, for those who, many of you would understand, for those who don't, fifth column, हम लोग कहते हैं कि, there is a fifth column, a group of people who are your countrymen, who are Indians. If you talk about a fifth column inside India, a group of people, bunch of people, well-connected, who are Indians, who work from inside India to subvert India. हमारे जो local दीमक हैं, that we can term as fifth columnists. So my question to you is regarding fifth columnists. A lot of people say that fifth columnists are a figment of a certain section of media's imagination. ऐसा कुछ नहीं है. So I'll give you an example, sir, and then I'll ask a question. I was speaking to a CRPF officer. I used to do a TV series called Patriot. I used to go and meet Fauji's all over. It was very, I enjoyed doing it, meeting my brother officers and all that, everybody. So I was in Chhattisgarh, in Bastar, and there I met a CRPF officer who was a highly decorated officer. This person had taken AK-47 bullets in the chest, and he was master of anti-Naxal operations. Very highly respected youngster tha. Must have had 10-15 years of service. Crack shot. He nearly broke down. He was in tears. He told me, sir, I can fight Naxals, but every time I go for an operation, or one of us goes for an operation, there is somebody in Delhi who's filing cases against us. यहाँ से directly phone कर देते हैं नक्सल, वहाँ पे हमारे नाम का केस फाइल हो जाता है. We are harassed in courts. I cannot fight a case and fight Naxals. I can't do both. And there is this feeling of, great dissatisfaction, perhaps, that such a brave officer who has taken bullets for this country, and yet he is, saying that he's totally frustrated because they keep on filing cases. So my question is that, in your experience, sir, 20 years in India's external intelligence agency, and I'm not asking you anything about the agency, sir. I'm just simply asking a question. Have you come to know about the existence of such people or such organizations who are local to this soil and they work against the country? Well, technically that was not my serve. It was not my turf. But we have fifth columns in quite a few countries. That much I can tell you. Don't underestimate our own agencies. We are always on the defensive, somehow trying to say that others are doing better than us. Yes. But Which is not true. It's not true at all. In fact, even if you don't read Urdu, you can read English. You go through Pakistani newspapers and every day you will have some activity or the other by intelligence agencies of India. But talking about the Indian fifth column, you see, again it brings me back to the same issue. There is something very wrong in our criminal justice system. We have not been able to handle things properly. Who collects information on the fifth column? It is the Intelligence Bureau. There are another 30 organizations that collect information, but I won't call them intelligence organizations because they don't have operations. But Intelligence Bureau collects information on the fifth column. But in your criminal justice system, do you have any provision whereby the intelligence gathered by your intelligence agency against the fifth columnist, against a saboteur, against a terrorist, suspected terrorist, is there any provision whereby you can include that as evidence in your court of law? There is no such provision. So many times, now, big international conspiracies, you get intercepts, you get so much of information, you get source information,
you get shared information from other intelligence agencies. We must have some provision whereby at least in the chamber of the judge, investigating officer can go and share that I have this intelligence input that should be considered when it comes to the result of this case. This should be taken in as evidence. We don't have that system, and there is so much of information, there is so much of intelligence which is worked out information, confirmed information, which if it is shared with the judiciary, probably many of the cases will get expedited. So yes, there is a fifth column, we look after them in a sense. There are various organizations that take care of this fifth column is directly or indirectly. But the main problem is this. And since you gave the example of that CRPF officer, you will be surprised to know there is a Andhra High Court judgment which says that if you are going on Nakshal operations and if something happens there, then the cases of at least attempted murder should be registered against the police officers who go for this kind of campaigns. Wow. They had done it in their own good faith. I am not blaming the judiciary at all. But what they are doing is, indirectly it really hurts the armed forces. It hurts the uniformed forces. They tie hands, but the main thing is, unfortunately, again I have to say this, what happens is in our judiciary, the predominance of judges, they come from one stream. Most of them were defense lawyers at some time or the other. So there is a natural bias against the police. There is natural bias against the prosecution. Again, I'm saying it's natural, I'm not saying it's unnatural. But everything seems to be going against the police. Now, how many of you really know that a statement recorded before the police officer is not even admissible in the court of law? How many of you know that except for panchanamas, inquests or post-mortem reports, nothing else that police do is admissible in the court of law? So what are we doing? You have only one legal agency, that is the police, that can conduct investigation, but you give them absolutely no credence. Ultimately, what gets recorded in the court of law, which gets cross-examined, only that is accepted as evidence. म्हणजे मराठीत तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, आपण हिंदी सिनेमामध्ये कुत्र फिरवलेलं पाहतो, ते ठिकठिकाणी जातं, वास घेतं, मग आरोपीला पकडला जातो. But do you know that the evidence gathered by or directed or shown by the dog is not admissible in the court of law because the dog cannot be cross-examined? So there are many infirmities in our system. At some stage you have to correct this system. Whatever has happened to Prasad Purohit has happened because of these infirmities in the system. And this is something we really have to correct at some stage or the other. And one thing that is to be done for that is the police should be given autonomy, functional autonomy. काम करताना कोणाचे इंटरफिअरन्स असायला नाही पाहिजे. Now the counter argument to this is that, but then police behave in such a way that we don't feel that we should make them autonomous. This is I call Churchillian complex. Churchill, when he was asked about Indian independence, he had said that Indians don't deserve independence. If you give them independence, the power will go to rogues and rascals, etc., etc. He used quite a few expletives after that. I don't want to repeat that. So at some stage, you have to come to this conclusion that for the last 100 years, I am talking of 1861, when most of the laws in India got codified. From then onwards, we have not trusted our police. We have not given them functional autonomy. In the process, all of us have suffered. Maybe it's time that we come up with something which will give autonomy to the police.
And if the police had autonomy, 3 police agencies would not have recorded 3 different sets of confessions as it happened in Colonel Purohit's case. Very interesting, sir. Thank you. I'll again go to the author. स्मिता जी, 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा, और मेरा आप जो आंसर देंगे वो 2 एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू कर्नल पुरोहित केस, बट इन अ वे इट इज रिलेटेड. ये जो पूरा शाहीन बाग का केस हुआ था, जब मुझसे पूछा था कि ये शाहीन बाग का केस सही है गलत है, मैंने बोला दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट, बट मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे घर के सामने प्रोटेस्ट क्रिएट्स केओस एंड ऑल दैट. दैट वाज माय ओनली पॉइंट ऑफ व्यू. ये साल भर चला शाहीन बाग का केस. जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट न्यू दिल्ली से टेक ऑफ करी, उसके 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया. एंड आई नेवर अंडरस्टूड. एंड दिस हैपेंड इन, एंड पीपल सेड नो नो इट इज बिकॉज ऑफ कोरोना. तब कोरोना की बात ही नहीं थी, वो हुआ था फरवरी को, कोरोना आया मार्च में. फर्स्ट शटडाउन वाज इन मार्च. विद इन 24 आवर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप लीविंग इंडिया, शाहीन बाग में तंबू वंबू डेग सब खाली ऐसे पड़े हुए, as if nobody was interested, and suddenly everything overnight it collapsed. That is example number 1. Example number 2, this Agniveer recruitment you must have heard about. So for week 10 days they were burning trains and all that. Week 10 days they were burning trains. Some people said it is wrong, some people said it is right. I'm not here to say it is right or wrong. That is something that Army headquarters, Navy headquarters and Air Force headquarters will decide. It's not my business to say it is right or wrong. The thing is that trains were being burned, हड़ताल हो रही थी, रोड ब्लॉक हो रहे थे, violence था. We could see it in media for 1 week solid. अचानक ये खत्म कैसे हो गया? तो suddenly I have a friend in some other news organization whose name I will not take, and one anchor also, who was every day giving, this guy was giving updates on Agniveer, ये हो गया, ये गलत है, ये सही है, देश में आग लग गई. You know how media does it. तो खूब उसको करा. Suddenly one day this guy, he said, sir मैं तो मुंबई में हूं. मैंने बोला तुम्हारे अग्निवीर का क्या हुआ? कह रहे नहीं, वो एकनाथ शिंदे एमएलए लेके चला गया. तो मैंने बोला अग्निवीर? कह रहा क्या, कौन सा अग्निवीर, वो तो कल की खबर है. What I want to tell you is that how far is media responsible for this circus? I'll tell you because as part of my duty, we were also expected to write on it. We did too because there was no option. बेटा ये बंद हो जाता है. सो मैं अपने आप से ही शुरू करती हूँ. मैं किसी और कोलीग्स और को जर्नलिस्ट से पहले खुद को ही कटघरे में रखना मोरालिटी के लिहाज से ठीक रहेगा कि हिंदू टेरर पे ये जो सो कॉल्ड एक्सपोजेज आ रहे थे खूब सारे, हर दूसरे दिन पता नहीं कितने लोगों को वो समय याद है मीडिया का. मैंने चूंकि आई हैव लिव्ड थ्रू इट, आई रिमेंबर एवरी डे ऑफ इट. रेणु जी, रोज एक नई स्टोरी आती थी और वो शुरू होती थी किसी छोटे मोटे किसी लोकल पर्सन से और सीधे मोहन भागवत जी तक जाती थी. हर दूसरे दिन पता चलता था कि भागवत जी से पूछताछ करने वाले हैं. कहां गया वो पूछताछ? बड़े बड़े प्रचारक, एस्टैब्लिश प्रचारक, जिनके हाथों से, और उसमें से कुछ को तो पर्सनली मुझे मालूम है उनका जीवन का पूरा, ये उनके हाथों से पूरी नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक यंग लड़के लड़कियों की पूरी पीढ़ियां निकली हैं. आशुतोष वार्ष्णेय जी जैसे लोग, ये वो आशुतोष वार्ष्णेय नहीं है जो अखबार में आप पढ़ते हैं. ये संघ के वरिष्ठ प्रचारक आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं जिनसे खूब सारी पूछताछ हुई. अशोक बेरी, तो ये सब लोग थे. मैं ये कहना चाह रही हूं कि बिल्कुल ऐसी चीजें जो एकदम हवा में थी कि मोहन भागवत से पूछताछ होने वाली है, संघ के इतने XYZ सबका नाम उसमें आ गया है. कौन बता रहा है नाम आ गया है? कहां है रिकॉर्ड? क्या एविडेंस है? किसने नाम बताया? कन्फेशन में आया है, फलाने ने कन्फेशन में बताया कि उसको उनसे कहा गया था, फलाने ने बताया उनसे कहा गया था. वी बिकम सो गलेबल, गौरव जी.
हमें जो कुछ भी फीड करता है हम लिखने को तैयार हो जाते हैं, सीधे सीधे हम लिखने को तैयार हो जाते हैं, हम डिक्टेशन लेते हैं बस इसलिए कि आज मेरे पास 2 वाक्य होने चाहिए जो दूसरे के पास नहीं है। एक्सक्लूसिव कि आज मेरे पास XYZ के कन्फेशन के बारे में 2 वाक्य मुझे पता चल गए, कल मेरे पास वो खबर होगी जो बाकियों को नहीं होगी, कल तो मैं सबकी नौकरी खा जाऊंगी। एंड इट इज सच एन अचीवमेंट। एंड देन गौरव जी, यू रीच अ स्टेज इन लाइफ व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द लार्जर पिक्चर एंड यू रियलाइज कि वो एक दिन की आपकी खबर जो थी उसने नेशनल कॉन्शियसनेस को, देश के मानस को कितना डैमेज किया होगा। आपने जो लिखा उसका प्रभाव कहां तक जा रहा है। तो ये दिक्कत केवल इतनी हुई है कि हम अखबार में लिखते थे या टीवी में कहते थे, आज अखबार टीवी की भी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर एक फिल्टर जरूर था, वो फिल्टर भले ही सब संपादक लेफ्ट लीनिंग कमिटेड लेफ्ट थॉट वाले होते थे, मैं आज खुल के इस मंच से ये बात कह रही हूं, कोई नेशनलिस्ट संपादक नहीं था, मेरे समय में तो नहीं था, आज थोड़ा सा बदला है। तो जब बदलने लगा तो गोदी मीडिया बन गया, तो कहां जाएं? हमने वो समय में जर्नलिज्म किया है जब पूरा न्यूज रूम लेफ्टिस्ट होता था, सारे संपादक लेफ्टिस्ट होते थे और मालिक कोई लेफ्टिस्ट नहीं होता, क्योंकि मालिक व्यापारी होता है। कोई गोयनका, कोई भर्तिया कभी लेफ्टिस्ट नहीं होता, क्योंकि उसको धंधा करना, इंडस्ट्री चलानी है। मीडिया इज एन इंडस्ट्री, लेकिन वो संपादकों के हाथ में छोड़ देते हैं और संपादक अपनी आइडियोलॉजी न्यूज टीम के ऊपर इंपोज करते हैं। और अगर आप एक ऑल्टरनेट थॉट, जो रेनू जी बार बार कह रही हैं, आप वो माहौल इतना सफोकेटिंग होता है, इतना आपको इतना गिल्ट फील कराता है। अगर आप न्यूज रूम में ऑल्टरनेट थॉट की बात करते हैं तो आपको इतना ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, अकेला कर दिया जाता है कि आप सरवाइव नहीं करते, सब मिलकर आपको खत्म कर देते हैं। और किया गया है, बहुत किया गया है, वो आपके सामने भी हुआ होगा। बहरहाल मैं इस बात पे आ रही थी कि एक पर्टिकुलर जब रिपोर्टर कोशिश भी, कम से कम न्यूज में ये था कि हमारे ऊपर एक फिल्टर होता था। कोई एक बार ये जरूर कहता था कि भाई जरा बैलेंस कर दो, जरा दूसरे से बात कर लो, या कहता था भाई तुमने ये लाया तो कहां से लाया, जरा कोई कागज तो दिखा दो। मुझे याद है मेरे पहले बॉस, मेरे पहले संपादक मुझे कहते थे, वो पंजाबी भाषी थे, बाय रूट्स ही वाज अ पंजाबी, सरीन साहब, ही इज नो मोर, आई पे माय रिस्पेक्ट्स टू हिम। सरीन साहब कहते थे, कुड़िए कागज ले आ। उनका एक फॉर्मूला था, कागज ले आओ, जो चाहो लिख सकती हो लेकिन कागज दिखा दो कि इस पे कोई सब्सटैंटिव कुछ है। अब तो सोशल मीडिया आ गया, उसकी भी जरूरत नहीं, वो फिल्टर भी खत्म हो गया। अब तो कोई संपादक भी आपसे कागज नहीं मांग रहा, कोई संपादक अपने लेवल पे 1-2 बार चेक भी कर लेते थे, उसमें कई बार हम बच भी गए, गलती प्लांट हो रहा था, पर अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब तो तुरंत। तो मैं ये कह रही हूं कि ऐसी ताकतें जो शाहीन बाग करवाती हैं, जो हिंदू टेरर का पूरा कहानी तैयार करती हैं, जो दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी फार्मर्स का कत्लेआम कर देंगे, और कुछ भी कपोल कल्पना चलाती हैं, रिपोर्टर उसको लिखने के पहले एक बार तो चेक करे। और मैं ये अपने पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ गौरव जी, संपादक की चाहे कुछ भी आइडियोलॉजी हो, मालिक की कुछ भी पॉलिटिक्स हो, रिपोर्टर एक बार डट जाए तो वो कुछ तो अंतर कर ही लेता है, कुछ तो फर्क ला सकता है। उसको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आंख मूंद कर किसी की डिक्टेशन ना ले। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एंड दैट इज व्हाट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट। वेरी वेल सेड मैम। इसके पहले कि मैं रेणु जी के पास जाऊं, मैं कहना चाह रहा था, जब एक बीच में हवा नहीं उड़ी थी कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज ले गए 2 साल पहले, लद्दाख का 1500 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज ले गए। उस समय मैं लद्दाख में ही था। तो मैंने सवेरे उठ के मैंने पूछा कि आर वी इंडियन सिटीजन और चाइनीज सिटीजन? ऐसा तो नहीं कि मैं पासपोर्ट का रंग बदल गया, ये चाइनीज। मतलब लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि मैं जैसे आज यहाँ पे हूं और हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कल मैं जाके बोल दूं मैं पूना में था ही नहीं कभी, मैं तो जिंदगी में पूना नहीं आया। People say it with such a straight face, and these are lies that are told every day, and there is no repercussion. आपने सोशल मीडिया की बात करी ना, इसका कोई रिपरकशन थोड़ा ना होता है। आपने बोल दिया राफेल की डील में, आपने बोल दिया चौकीदार चोर है, आपने बोल दिया 58,000 करोड़ रुपए अंबानी को दे दिए,
वहां पे फ्रेंच कंफ्यूज हो गए, कौन से 58 करोड़ रुपए, कौन सा अंबानी, उन्होंने नाम ही नहीं सुना। अच्छा, अचानक चौकीदार फिर चोर नहीं था, वो 3 महीने के लिए चोर था, फिर चोर नहीं था, फिर वो ईमानदार बन गया। बोला डिमोनेटाइजेशन में लाखों लोग मर गए, कौन लाखों, किसी को नहीं पता लगा। यानी कि कोविड में इतने नहीं मरे जितने डिमोनेटाइजेशन में। क्यों मरे डिमोनेटाइजेशन में? क्योंकि लाइन में लगना पड़ रहा था। यार हद हो गई, शादियों में नहीं देखा लोगों को लाइन में लगते हुए खाने के लिए। तो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मैं सर के पास आऊंगा, देन वील एंड इट, और हम 15 मिनट ना आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे। तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा माइक लेके आप लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि फिर हम जो हमारे गेस्ट्स आए हैं, एस्टीम्ड गेस्ट्स, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। और बस मैं आपसे बात करूंगा और सर आपसे बात करूंगा, एंड देन वी विल गो टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो रेनू जी, आपका जो पब्लिशिंग हाउस है, आप ये कहती हैं कि इट इज नॉट अबाउट सेंसेशनलिज्म, इट इज अबाउट पब्लिशिंग द ट्रूथ विच नोबडी एल्स विल पब्लिश। तो आई बोला आई विल पब्लिश इट। और क्या क्या आ रहा है बताइए हमारे लोगों को, इतने लोग बैठे हैं, व्हाट नेक्स्ट? ये लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मैन बिटरेड, ये किताब हो गई प्रिंटेड, डन, बेस्टसेलर, ये अपनी अब ये अपनी स्टीम पे चलती रहेगी। नहीं, अभी बेस्टसेलर नहीं हुई है, सब लोग को खरीदना है। बेस्टसेलर हो जाएगी, उसके बाद बेस्टसेलर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस हो जाएगी। देखिए, कमिटमेंट ले लिया पब्लिक से। अब नेक्स्ट बताइए क्या है? नेक्स्ट तो अभी मैं अंडर रैप्स ही रखना चाहूंगी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन आई वेलकम एनीबडी हु हैज एनी स्टोरी। बस यही रिक्वेस्ट है, हम लोग ये जरूर देखते हैं कि एनी क्लेम्स दैट आर मेड इन द बुक दे आर वेल सब्सटैंशिएटेड। वो हो तो मैं कुछ भी छापने को तैयार हूँ। एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। सर, लास्ट क्वेश्चन गोज टू यू सर, आफ्टर विच विल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी, आप पूछिए, फिर मैं पूछ लेता हूँ। आप पूछिए ना। एक तरफ तो हमें चिंता होती है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है, पूरा जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इतना मतलब अपनी जान, अपने परिवार को भुला करके और अपने पूरे हर रोज अपने आप को पुटिंग देमसेल्व्स इन इन द लाइन ऑफ फायर वो काम करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ राजनीतिक कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, वो अपने शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदे के लिए, जिसमें लॉन्ग टर्म देश का बहुत बड़ा डैमेज होता है, शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदों के लिए वो कुछ प्लान करते हैं, तो कुछ ऑफिसर्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों इतने तैयार रहते हैं? Why don't they stand their ground? Sorry for the question, but I needed to ask this. I will take the approach of stock market analyst. I will not comment on any particular stock, but I will tell you about the general sector where you have to pay attention. See, ultimately, an officer has his own career. I have been in service for 37 years. Let me assure you, if you take the right stand and if you take the legal stand, there is no question anyone can break you. Maybe you come across a few people who succumb to certain pressures or temptations, but we still have a system which is I would say, relatively good system. Only thing is, I have to link it to social media. I am coming. You asked her about the publishing house. Today, every individual has become a publishing house, and this is going to create a huge pressure on the system, on the police officers, because everyone is publishing whatever he wants and whatever he can, and that can lead to very disastrous kind of circumstances unless this is controlled. And don't expect the government to control these things. You have to see what your children are doing. You have to ensure that the family unit is intact. You have to ensure that the family has right influence on the next generation. You have to ensure that WhatsApp and Facebook and things like that are not misused. You have to ensure that because the media gives access to everybody into the house, you have to ensure that there is no radicalization of your children taking place. So it's tied up with a big question. Blaming an individual officer is not really very fair when the whole society is getting influenced by these unhealthy trends. And for that, some very serious thinking has to be done.
So, sir, the last question before we move on to the audience, sir, is what are the lessons learned from all this, sir? This Colonel Purohit's case, sir. This will become another lecture probably. So I will confine myself. The main lesson for me from what has happened is that the intelligence services need some kind of a revamp. You have to consider certain aspects. I was in a neighboring country for 4.5 years. In another 6 months, probably I could have become their citizen by naturalization. But what I'm trying to say is, we are spy masters. We're not spies. So, getting back to your book, you have tried to treat a spy master as a spy, which is very unfortunate. And that's why there has to be some institutionalization of the intelligence services. I'm not saying that they should be hidebound by rules and regulations, but there has to be an institutionalization. Ultimately, what we do is what the government directs us to do, or what the establishment thinks is in the right interest of the country. You can't hang people for following the directives. You can't hang people for making an effort to see to it that the national security doesn't get compromised. So, this is a very big lesson that probably we have to think about how to codify at least certain basic tenets of the intelligence agencies. Then this kind of incident will not happen. That is one thing. The second thing is, as I told you earlier, I am very passionate about police reforms. They will not happen because I say it. They will not happen because the politician, they don't want it, if you ask me. Police today is being used as the sword arm of the politician. And we are also the whipping boys. Whipping boy मुझे क्या concept माहिती है ना? Earlier the prince used to have a friend. If the prince commits some mistake, the friend will be whipped. So police have become whipping boys. Something goes wrong. Administration does something wrong. It is the police who are in the front because there's a demonstration. And then ultimately it becomes a tussle between the demonstrator and the police. And the main issue goes somewhere else. So we have to take the police out of this situation where they are also the sword arm and they are also the whipping boys. So unless you people ask for it, police will never get reformed. The system will never get reformed. Unless you want it, unless you put pressure, things are not going to improve. So no point in blaming police. No point in blaming the police only. Let me say this. You have to start a movement whereby you ask for a better policing, you ask for better administration. Then the things might change. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, huge round of applause for all our three panelists. Thank you, sir. Thank you, Smita ji. Thank you, Renu ji. Fantastic. I enjoyed myself. Now, we only have time for 3 questions. We have okay. Major Sahab, hello. One question addressed to you, please. So, 1, 2, and then I'll come back, sir. Thank you. Please. Sir, my request is please direct it to a specific person, sir. I don't have a question, Major Gaurav. I have something which I have to tell you about Colonel Purohit. Sir. To Jayant to all, my name is Brigadier Prashant Shevde, and I was posted to OTA Chennai as instructor 94 to 96. So that brings smile to Gaurav's face. Recollect. I was also there, sir. Yes. So Purohit was one of my students, and as we brief our students at OTA, we say that we make men out of boys. That's the bottom line for the training. And when we parted, so we told the student officers, we included Purohit also, I said, you will be facing a lot of challenges in your life, and just keep one thing in mind. When the going gets tough,
the tough get going. Remember this, and this will take you throughout your life. I met Purohit after 1994 or so in 2019 in one of the stations, and he was there. So we caught up. We were keeping ourselves fit and we were walking. So since I was an instructor and I belonged to this country, great state of Maharashtra, he opened out to me and he used to tell me everything what happened in this case. Probably, you compiled the whole this thing through this thing, but I know what he opened his heart to me. And I just told him one thing. I said, first, you make me proud because you have stood by the bottom line, gone through all the tortures, the physical, the mental, and the kind of stigma and everything, and you have stood your ground, and I'm very proud of you. I told him that. Another issue which I told him, I said, every great noble work, every tough thing that comes, everything that's tend to be controversial, will not see the light of the day unless it is documented. That time I had voiced to him, I said, Purohit, make efforts that this is documented, your journey, your troubles, your challenges, and what you faced. Make an effort to document it. And today, it is a great pleasure to see that this book is here, and we must compliment everybody on this. Thank you, sir. Major sir. Sir, Gaurav, just give it to me. Yes, sir. Yes, sir. I would like to mention an issue that Mrs. Purohit was there with him that time. And she stood like a rock behind him. Total woman power. And just to take this point forward, what you see in the dais today is a lady who's taken the courage to write this book, and there's a lady who has taken the courage to publish it. So we must applaud to this woman power. Thank you, Gaurav. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Jayant, Major Sahab, this question is addressed to you. I am S. Balakrishnan from Mumbai. Sir. I find it extremely bizarre that the Ministry of Defence has conducted an inquiry and found Colonel Prasad Purohit totally innocent. The allegations of terrorism, Hindu or Muslim or whatever it is, are totally baseless, and they have concluded that's the reason why they have retained Prasad Purohit in the services, and they have given him kind of extremely important assignments. This is what the MOD is saying. But on the other hand, the central government, especially the NIA and then other agency which are investigating, I have seen the trial which is going on in Mumbai. The vehemence which the public prosecutor is opposing the discharge application of Colonel Purohit, it is something unbelievable. What is happening during the time of the Congress regime, with the same vehemence, his application for discharge is being opposed in the court. My question is there a major, is it that the MOD and the rest of the government of India, they are not on the same page? This is an extremely bizarre situation. And the other thing is, the Neta, the leader, who invented very mischievously and who is notorious for his connection, for his most anti-national leader of India, he is this person who started this concept, so-called concept of Hindu terrorism. But this man is rewarded with a Padma award by this government. What the hell is going on? I just want to know. Thank you. Let me I just want to tell you, very few people know this. Up to the trial court, that is, session court is the maximum that you have in trial courts. The judiciary is under state. High Court and Supreme Court are under the center. I hope you got my answer. Even now, it is in power, but still. Let's see what happens now. Yeah, it is actually, sir, sub judice matter, and on certain things, it's good that the question you asked is sub judice, sir, because honestly, I don't have an answer to your question. So I can hide behind saying it is sub judice. You have given me an excuse, but the truth is that the question that you asked is extremely uncomfortable, sir. It's a very, very uncomfortable question, and MOD को तो हम ही खुद बोल रहे हैं, sir. A lot of reforms required in MOD. I mean, every officer sitting here would bear with me that it needs a complete overhaul, sir.
Good evening to you, the panel sitting there. My question is directed at Mr. Umranikar. It is easy for any intelligence agency or anyone to compromise a particular individual. You can target an individual, you can compromise, there are many ways to do it. But to compromise or subvert the entire system or a segment of the system, especially in an organization like army or uniformed services, police, where we all function as a team, how this kind of a thing can be achieved wherein you can create a group, it's like you form a commando to handpick people and then they subvert the entire system. How the vested interests are able to succeed in these things? And the case in our hand is there as an example. Thank you. Yes, answer is very simple. It is based on human weaknesses. You think only one individual has weaknesses? Yeah. You see, it's very difficult to hide anything in a group. You see, one man can hold the secret. When it becomes known to two people, it becomes confidential, and thereafter it's the public information. So in any group, like a police organization, an army, if I have to nullify anybody, and I'm working as a group, then it is not going to remain any confidential. It is going to be public. The principle is the same, whether it is one individual, whether it is group. When you want to compromise them, you have to work on their weaknesses. That is the shortest Also, maybe answer you that subvert one and he helps you subvert the others. Well, these are all operational tactics. I won't go into details. Yes, sir. No, there is a very old saying that, if you want three people to keep a secret, you have to kill two of them. So, yes, sir. Major sir and the writer, I have one query. The thing is, I've seen it all very closely. I am Dr. Anand Bhagwat. I have seen people literally running away from Colonel Purohit in bad days. And the other thing you talked about, Dr. Mohanji Bhagwat, why was he not questioned? Because there is a cost to it, and unfortunately, what all happened with Colonel Purohit, the people who did it, you have already mentioned who did it, they never found any cost in this. They didn't have to pay anything. So you mean no repercussions, sir? No repercussions. So I sincerely ask you whether Indians, or maybe let's call it Hindus, do we deserve Colonel Saab? Do we deserve somebody like Colonel Saab? You have asked a very thought-provoking question, sir. I don't think I am qualified enough to answer a question of such depth and proportions. I am a very simple news reporter who was not ready to buy the dictation that was given by the powers. And I thought the time had come, as I said in my opening remarks, the time had come to put the record straight. Sometimes a reporter, because he or she has less stakes than the so-called big people, a reporter can dare to write something which others will not write because they have bigger stakes. I have very little stakes. My biggest stake is my salary. It ends by the 20th of the month. Then I wait for my next salary. So less ambition, less stakes, less chance. मेरा कोई बहुत ज़्यादा क्या बिगाड़ लेगा? So that is why I wrote what I have written. What you are asking, sir, I completely understand your sentiments. When I mentioned Pujniya Bhagwat ji, my only point was that sometimes when people give you news stories which have no legs, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, at least a reporter is considered to be an intelligent person. A reporter is supposed to have a judicious mind. Why do we blindly take on any dictation? Do we even reflect what impression it is having on the national psyche? I remember in journalist clubs, in gatherings, in social events, in general gupshup among friends, there was a period. Thank God it was a short period. There was a period when the moment we mentioned any terrorist attack in India, the next sentence of
invariably used to be, हाँ but अब तो हिंदू टेरर का भी उतना ही चल रहा है, अब तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है. We speak of things so casually. Do we realize? And you were asking about the media, Gaurav ji. This theory of Hindu terror would not have, thank God it stood for a short time because the country was not ready to buy it. Because it was a complete hoax, a smoke screen. But if it managed to create headlines for a certain period of time, the media played the biggest role. Because media was ready not only to write what was being told, they amplified it many more times. Does anybody remember that one complete primetime show through the entire primetime debate on one evening, which was devoted only to one question when Colonel Purohit was given bail, why there was an army escort, why he was escorted by army vehicles. On that one sentence, they conducted an entire primetime show, repeating the same visual about 200 times. Can't anybody understand why he was given security? Have we started questioning the army's wisdom to provide security to its people? So I am saying, in our effort to score over others, we just lose sense of good and bad. We become unjudicious. That was my point. नहीं मैंने इसमें I'd just like to add one more thing. भाई बोलो ना कि questioning the army's wisdom. You all saw that video, right? In which the army was teaching Punjabi to the Chinese. There were some advanced Punjabi classes happening. Now, yes sir, very recent. Now, somebody actually came back and said that हमारे आर्मी वालों को, I'll not take the name of that person, he said हमारे आर्मी वालों को पीटा. Now, you see, you can't argue with such logic. The visuals show that our army is beating up the Chinese army and the Chinese army is running away. And a national leader gets up and says, नहीं, हमारी फौज पिट रही थी. Which leads me to this question कि भाई आप कौन सी फौज को अपनी फौज कह रहे हो यार? मेरा नाम है हिमांशु. सर, आप लोगों की तकरीर से ये साफ है, जाहिर है कि जो साजिश थी वो एक तो हिंदू टेररिज्म के बारे में थी और इनको एस्केप गोट बनाया गया कर्नल पुरोहित को. हैरत इस बात की है कि इसमें 3 मसले हैं. एक तो बीजेपी कहो या आरएसएस कहो या हिंदू महासभा कहो, ये चुप के क्यों बैठे. दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पुलिस फोर्स ने या आर्मी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा. इन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की. ऐसे कैसे हो सकता कि एक बंदा जा रहा है, एक फौजी जा रहा है और उसको हम ये करेंगे. किसी ने भी उसको रोका नहीं. ज्यादातर आरएसएस, बीजेपी, इन्होंने कोई नहीं, जस्ट हो रहा था उसको होने दिया. ये खुलेआम एक आदमी को जैसे फांसी में लटका दिया. ये बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल नामंजूर है. किसी ने भी उसके बाद आज किताब आ रही है, उसमें कुछ लोगों को पता चलेगा इतने साल क्यों हम चुप रहे. ये हमारा सवाल है. Question is to me, sir. Sir, is this question to me? Sir, I would request if Umranikar sir is answer. Sir, आप थोड़ा सा. नहीं, मुझे The benefits of being an anchor. मुझे आदत है ये, पुलिस को हमेशा ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं. देखिए, हर देश की एक सिस्टम होती है और अल्टीमेटली वी आर ए डेमोक्रेसी एंड वी इलेक्ट our leaders. If the choice is wrong, you get wrong results. So don't blame the army, don't blame the police. It started somewhere at a very high level and we were responsible for electing them. So if at all you want to blame, look in the mirror and you will get the answer. I think, sir, that will be the last question, sir. We are already running over time. Okay, so we'll take one last question, please. Just one last question, sir, please. Yeah. One last. Yes, sir, please. Good evening. Good evening. I'm Colonel Bapat. Sir. No doubt a narrative was created, false narrative was created
to trap somebody and make him a Hindu terrorist, and then expose one particular section of society to be a terrorist. But such narratives have been created in past also. Just about a year back, I heard a interview of a Lieutenant General from Indian Army, retired veteran, very famous. I was in Sri Lanka in Operation Pavan in Vavuniya, in very, very hot sector. So he said the Indian Army was sent to Sri Lanka so that things will happen in Kashmir. Wow. Oh. He has said it on the TV. I have seen this thing in the public media also. So anything can be done by these politicians, and they can create any narratives. We suffer, ultimately the nation suffers. I congratulate the author madam and the publisher madam for taking such bold steps, and I hope that Colonel Purohit will come out as a hero of the nation. And I hope one day a film will be made on him as a most patriotic person of India. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all for your precious time, and thanks for the excellent responses given by the dais to the questions of the public, as well as the critical discussion on the book. I take this opportunity to thank each one of you who is present here, in spite of ulta news coming out in the media and the social media that this good program is not going to happen. A lot of opposition for this program. Nothing of that sort happened. You must have seen, because we have our set of Karyakartas here who have worked really hard to make this program a success. I should mention Abhay, Kaustubh, Siddhesh, Dhananjay and Amol, all my Karyakartas who have really worked well. There could have been some inconvenience to each one of you for registering at the gate and then the parking snarls and all, but still we have a packed house here, and thank you all for that. I would thank especially the management of SP College, that's Shikshan Prasarak Mandali, their general body and their governing council chairman, Advocate S.K. Jain, who in spite of all the pressures from various quarters, who are trying to subvert the agenda of this program, trying to getting this cancelled and all. They had made an application to police, and they're trying to do some demonstrations here without budging under any pressures. They made this all available to us. We thank them all. Thank you, Umranikar sir, for your precious time and guidance. Of course, both the ladies here, Renu ji and Smita ji. Actually, this program came up with too many challenges. First, 2 days back, the demonstration started. Today morning, Smita ji missed a flight from Delhi. She had to fly to Mumbai and take a road to Pune. Barve sir went ill, and Satyapal ji almost halfway through to Pune had to go back to Delhi because of some urgent meeting. In spite of all the challenges, we could conduct this program in such a grand manner. And special thanks to Major Gaurav Arya for his time for this particular program. He made it a point that he came here today morning. I was told he has not slept for 2 nights, and he doesn't expect to sleep for another 2 nights because of some other engagements. So I thank you all for being here, and special thanks to the police department. They made excellent arrangements, looked after the security of this place, and a special thank to the media as well. They have been giving balanced news. Like normally, whenever such a controversy erupts, just one-sided news are run. That we saw in Colonel Purohit's time, when we could see only one-sided media reporting the whole thing. The basic word Hindu terror is a misnomer. A Hindu cannot be a terrorist. Otherwise, we all here are sitting terrorists. So I'm sorry to say that, but from those times, we have seen a one-sided reporting. But when this function came up, we could see in the media balanced news was given. Thank you for that. And today also a lot of media is reporting this. We thank all of you here. Thanks to my colleagues, D.R. Barve sir, Prasad Purandareji, Pratitosh Pradhan,
Ravi Dhawlikar, who have come here, and I should put on record, many people have travelled from outside Pune. Someone has travelled as far as from Jammu, from Goa, from Madhya Pradesh and other places just to be a part of this program. Thank you all. Thank you so much. And now I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata ki. Thank you all. The books have been put on display and sale outside on a counter. You can always make use of that. Thank you. राष्ट्राय स्वाहा.